हेलो दोस्तों, ब्रेनियक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपन ने ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें अपन टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी एंड वेरियस अदर पीसीएस एग्जामिनेशंस. So we have completed 2 class of geography, introducing the basic concepts of geography. Now the topic for our third class is today universe and theories related to its, like Big Bang or steady state theory. Like then next topic is stars. Stars कैसे originate होते हैं, है ना, formation of the star. Then galaxy, various types of galaxies. Then solar systems, planets. So let's start our class. So our first topic is universe. Universe can include everything and anything that we know, like all the planets, all the space, stars, galaxies, dwarf planets, everything that we can think about is a part of this universe. Definition is limitless expanse of space surrounding, consist of solar system, stars, galaxies, etc. तो जितना भी कुछ अपन सोच सकते हैं वो सारा कुछ यूनिवर्स का पार्ट है. यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम्स होते हैं. जैसे अपन अर्थ इज लोकेटेड इन मिल्की वे गैलेक्सी, है ना. तो फिर सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स होते हैं. प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, जैसे अर्थ, जैसे कि आपको पता है अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ. तो लगभग कितनी आपके हिसाब से एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज होती होंगी? गैलेक्सीज कैन हैव नंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड, इवन आवर मिल्की वे, क्योंकि साइंस अभी तक इतनी डेवलप नहीं हुआ ना. गैलेक्सी तो बहुत बड़ी चीज हो गई है. ऑन एवरेज यूनिवर्स हैज 100 to 400 बिलियन गैलेक्सीज. यूनिवर्स में 100 से 400 बिलियन गैलेक्सीज होती हैं. 100 to 400 billion galaxies, and each galaxy is containing 100 to 400 billion stars, and each galaxy contains 100 to 400 billion stars. तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है 100 to 400 बिलियन स्टार. जैसे आपको पता है सन भी अपना एक स्टार है जिसके अराउंड अपना सोलर सिस्टम है. So there are various theory behind the origin of universe. Origin of universe कैसे हुआ था, कैसे सब कुछ बना. तो various theories हैं इसके लिए. जैसे एक थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी. एक और थ्योरी है पल्सेटिंग थ्योरी. एंड फाइनली third is our Big Bang theory. Big Bang theory of origin of universe. So let's start with first steady state theory. Steady state theory. Steady state theory was proposed by Fred Hoyle. फ्रेड होयल का कहना है कि मतलब ओवरऑल साइज और मास यूनिवर्स का कांस्टेंट है. ना ही यूनिवर्स का साइज और मास बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, वो कांस्टेंट है. और बोलते हैं कि यूनिवर्स की कोई तो बिगिनिंग भी नहीं है ना ही कोई एंड है, बट बोलते हैं कि ये यूनिवर्स कांस्टेंट स्टेट ऑफ एक्सपेंशन में है. मतलब एक्सपेंड होता जा रहा है, ना तो उसकी कोई बिगिनिंग है ना एंड है, बट इट इज इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ एक्सपेंशन, creating new stars and galaxies at the rate old ones become unobservable. कि जैसे जैसे नई स्टार्स बन रही हैं, गैलेक्सी बन रही हैं, जो पुराने स्टार्स और गैलेक्सीज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं. तो बोलते हैं कि पहला क्या बोलते हैं कि
overall size and mass of universe constant is constant at any point of time, है ना. दूसरा, universe has no beginning, no end. Universe has no beginning and no end. And no end, ना ही स्टार्टिंग है इसकी ना ही खत्म है. बट बोलते हैं कि however it is in constant state of expansion. It is in constant state of expansion, creating new ones at the rate old ones becoming unobservable. Becomes unobservable. सेकंड थ्योरी है अपनी पल्सेटिंग थ्योरी. पल्सेटिंग थ्योरी. पल्सेटिंग थ्योरी. पल्सेटिंग थ्योरी वाज गिवन बाय आर्थर एडिंगटन. एक अपने आर्थर एडिंगटन है रिसर्चर. उन्होंने थ्योरी दी है. वो बोलते हैं यूनिवर्स एक्सपेंड होगा होगा फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. बोलते हैं जब ये एक्सपेंड होता है तो नई गैलेक्सीज बनती हैं एंड जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मतलब ये खत्म हो जाती हैं. ये खत्म हो जाती हैं. तो बोलते हैं अब ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा. बोलते हैं एक्सपेंड होता है ड्यू टू एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन की वजह से एक्सपेंड होता है. कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल. ग्रेविटेशनल पुल. So pulsating theory by Arthur Eddington said that the new universe expands and contracts alternatively. It expands due to explosion and contracts due to gravitational pull. And the third theory is our Big Bang theory. Big Bang theory. Big Bang theory by George Lemaitre. ये किसने दी थी बिग बैंग थ्योरी. ये दी थी जॉर्ज लेमेटायर. कब दी थी. इन्होंने दी थी 1927 में. नाउ accepted theory was Big Bang theory related to the origin of universe. इनका कहना है कि before 13.7 billion years, the universe was extremely compact and hot singularity. Extremely compact and hot singularity. बोलते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले कुछ नहीं था. पूरा यूनिवर्स स्पेस टाइम कुछ नहीं था. एवरीथिंग वाज इन अ सिंगुलरिटी. बट 13.7 बिलियन ईयर्स को क्या हुआ था. एक्सप्लोजन हुआ जिसको अब कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ जिसको अपन ने बिग बैंग बोला. जिसको अपन ने बिग बैंग बोला. This led to the formation of all the stars, galaxies that we know. And from that point of time, the universe is continuously expanding. Big Bang led to formation of all the matters, forces of physics, forces of physics, time, space, time, everything, space, time, everything. From that point of time, that point, from that point, universe is continuously expanding. Universe is expanding. Universe starts to expand and is still continuing today. Still continuing today.
ये अपन एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का पता करते हैं थ्रू रेड शिफ्ट बाय हबल टेलीस्कोप से। सबसे पहले 1929 में हबल ने प्रपोज किया था कि ऑल द ऑब्जर्वेबल स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, है ना। ये उन्होंने डिस्कवर किया था थ्रू रेडशिफ्ट हबल। एंड दिस रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज हबल्स कांस्टेंट। तो बोलते हैं अपन हबल्स कांस्टेंट। दिस रेट ऑफ एक्सपेंशन इज नोन एज हबल्स कांस्टेंट। तो जब बिग बैंग हुआ तो इन फर्स्ट 3 मिनट स्टार्टिंग के 3 मिनट में क्या हुआ, फर्स्ट पार्टिकल इन एटम्स फॉर्म हुए, फर्स्ट पार्टिकल्स इन एटम्स फॉर्म then about 4 lakh years after the Big Bang, about 4 lakh years after Big Bang, microwave light was released. Microwave light was released. इसको रिकॉर्ड किया था कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर। दिस इज अ प्रूफ ऑफ बिग बैंग। कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर ये क्या है, प्रूफ है बिग बैंग का। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ बिग बैंग? कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, प्रूफ ऑफ बिग बैंग। Then after this microwave light, there is a period of darkness for another few hundred million years. Then followed by visible light, ultraviolet radiation, UV radiations, followed by formation of stars and and galaxies. This is how our universe formed, and from that point of time, it is in continuous state of expansion. तो आप देख सकते हैं बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेटर ने दी थी। Simply speaking, the summary is before 13.7 billion years old, nothing was there. Compact hot singularity. There was a cosmic explosion known as Big Bang, which led to the formation of all the matters. है ना? Then from that point of time, universe start to expand. This and still continuing today. This we can know through redshift. Redshift proof was given by Hubble. This or the rate of expansion is known as Hubble's constant. After Big Bang, in first 3 minutes, first particle and atoms formed. Then about 4 lakh years after Big Bang, microwave light was released, which is recorded by Cosmic Background Explorer. Then after microwave light, there is a period of darkness followed by visible light, ultraviolet radiations, followed by formation of various of stars and galaxies. You know that initial stars was bigger than any of the stars near our solar system. This is uh, the theories all related to origin of universe. So now our next topic is stars. कि stars क्या हैं? आप सभी ने स्टार्स देखा होगा रात में अपनी छत पे बैठ के तारे देखना, तारे गिनना। सब नहीं किया है, मैंने भी किया है, आपने भी किया ही होगा। तो आपने देखा होगा कि मतलब काफी दूर है, बहुत छोटे दिखते हैं नेकेड आइज से, ट्विंकल करते हैं। तो ये कैसे ट्विंकल करते हैं ये सब अपन जानते हैं। पहला, स्टार्स क्या है? नासा की डेफिनेशन है कि मैसिव सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी ऑफ द गैस, मैसिव self luminous celestial body of the gas, self luminous celestial body of gas that shines by radiations derived from its internal energy sources.
स्टार्स क्या है? मैसिव सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी ऑफ द गैस दैट शines by radiation derived from its internal एनर्जी सोर्स। इंटरनल एनर्जी सोर्स मतलब देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि सन है, सन के बारे में आप जानते होंगे कि सन है अपना, सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है जिससे वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसकी वजह से अपन को मतलब सनलाइट, सनरेज, ये सन इतना ब्राइट दिखता है ना। तो ये रहा स्टार्स। तो अब देखते हैं कि स्टार्स फॉर्म कैसे होते हैं। सबसे पहले होता है स्टेलर नेबुला। स्टेलर नेबुला। स्टेलर नेबुला क्या है? जियांट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। जियांट क्लाउड है गैस एंड डस्ट का। द एटम इन दिस क्लाउड आर पुल टुगेदर बाय ग्रेविटी। इसके ये जियांट क्लाउड है गैस एंड डस्ट का। जियांट क्लाउड है गैस एंड डस्ट का। इसके अंदर जो एटम्स हैं, these are pulled together by gravity। these are pulled together by gravity। इससे क्या होता है? इस पुलिंग से हीट रिलीज होती है। हीट रिलीजेस, दिस रिलीजेस हीट एंड द एंटायर नेबुला स्टार्ट्स टू स्पिन। स्टेलर नेबुला फॉर्म करता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार प्रोटोस्टार के व्हेन द स्पिनिंग गैसियस मास रीचेस अ हाई टेम्परेचर, है ना। तो ये जब ये स्पिनिंग गैसियस मास अपना हाई टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये क्या होता है? तो कि हॉट कोर बना देता है। हॉट कोर, है ना, हाई टेम्परेचर होता है जिसमें। इसको अपन प्रोटोस्टार बोलते हैं। प्रोटोस्टार से फिर अपना एवरेज स्टार फॉर्म होता है जिसको अपन देखते हैं एवरेज स्टार। बस दो दो तरीके के स्टार फॉर्म्स होते हैं, एक तो एवरेज स्टार और दूसरा फॉर्म होता है मैसिव स्टार। अगर मैसिव स्टार तब फॉर्म होता है जब जो स्टार का मास है वो सन के मास से 10 टाइम्स होगा, या उससे भी 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, मतलब 10 टाइम उससे ज्यादा होगा। तो ये रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैसिव स्टार। बट इफ द मास इज लेस देन 10 टाइम्स ऑफ द सन देन इट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ एवरेज स्टार्स। तो अब कहानी शुरू होती है एवरेज स्टार और प्रोटोस्टार से। फिर स्टार है। एवरेज स्टार पे जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता है तब तक वो स्टार चमकता है। वंस द सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन इज runs out, then the core of this star starts to contract. Core starts to contract. Inner core contracts while the outer core starts to expand। में क्या होता है? this inner core contracts while this outer core expands। This results into the formation of red giant। red giant। तो यहाँ अपन लिख देते हैं कि हाइड्रोजन सप्लाई runs out, reaction stops and so result into formation of red giant। मैसिव स्टार के केस में क्या होगा? मैसिव स्टार में भी सेम यही होगा कि इनर कोर कॉन्ट्रैक्ट्स, आउटर कोर एक्सपेंड, बट एज यू नो द साइज ऑफ मैसिव स्टार इज बिगर, तो इट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेड सुपर जियांट। ये बहुत बड़ा होता है रेड सुपर जियांट। एंड द नेक्स्ट स्टेट इज planetary nebula। This outer core collapses and the formation of planetary। This outer core collapses, inner core बचता है। inner core बचता है। This is called planetary nebula। and outer core collapses into gases। outer core collapse हो जाता है gases में। outer core collapses into gases and the hot inner core are left known this state is known as planetary nebula। planetary nebula। In case of red supergiant, when the dense core of red supergiant explodes, it causes the release of huge amount of energy, and this is known as supernova explosion। जब ये रेड सुपर जायंट की कोर
कोलैप्स होती है तो ये बहुत एनर्जी रिलीज करती है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन अगर हुआ नियर बाय आवर गैलेक्सी, तो everything nearby it, including our galaxies, it also can explode or finish. This is known as supernova explosion, release of huge amount of energy. Supernova explosion, फिर ये प्लेनेटरी नेबुला ये व्हाइट डॉर्फ बना देगा, जो धीरे से मतलब इट्स द लास्ट स्टेट ऑफ स्टार कन्वर्ट इनटू ब्लैक डॉर्फ एंड स्टार खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद भी, सुपरनोवा के बाद भी दो कंडीशंस हैं। If the leftover mass is more than 1.42, it is between 1.4 to 3 times the mass of the sun, it's resulted into formation of neutron star. But if it is more than 3 times the mass of sun, more than 3 times mass of sun, it's formed black hole. अब ये ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल इज अ सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल क्या है? सिंगुलैरिटी है with infinite gravity and density। सिंगुलैरिटी है with infinite density and gravity। infinite density and gravity। डेंसिटी एंड ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक होल के पास से पास होगा तो ब्लैक होल उसको खींच लेगा और वो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल इज इनफाइनेटली डेंस। ये है अपना स्टार फॉर्मेशन। पहला स्टेलर नेबुला, फिर प्रोटोस्टार, फिर एवरेज स्टार, देन रेड जियांट, प्लैनेटरी नेबुला, व्हाइट ड्वार्फ। इफ इट इज मैसिव स्टार देन रेड सुपर जियांट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। It, after supernova explosion, if mass is less than 3 times the mass of the sun, then neutron star, and more than 3 times then black hole। तो दोस्तों अपन ने यूनिवर्स पढ़ लिया। अगर आपको नोट्स नहीं बनाए हो तो यू कैन मेक, आई हैव shown this on your on this slide। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू यूनिवर्स यू कैन स्क्रीनशॉट इट। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू यूनिवर्स, स्टेडी स्टेट थ्योरी, देन पल्सेटिंग थ्योरी, है ना, देन बिग बैंग थ्योरी। तो ये सब अपन ने पढ़ा। फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्स। स्टार्स के बारे में अपन ने कम्प्लीटली पढ़ा। सो यू कैन स्क्रीनशॉट। अब समझते हैं कि स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्टार्स मतलब स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, सो दे ट्विंकल। बट यू बट द concept is planet also have their own light. But why planets do not twinkle and stars twinkle? Let's understand. Twinkling of stars को समझते हैं। स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो टर्बुलेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, टर्बुलेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस की वजह से, डिस्टरबेंसेस की वजह से लाइट कमिंग फ्रॉम द फार अवे स्टार्स व्हेन एंटर द ड्यू टू द डिस्टरबेंसेस इन एटमॉस्फेयर स्टार्स ट्विंकल। अब देखते हैं कि प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, प्लेनेट क्यों नहीं चमकते, स्टार्स क्यों चमकते हैं। As the light coming from stars covers a long distance, light from star traveling very long distance, very long distance. And when it reaches the Earth, it appears to be coming from point source. Appears to be coming from point source. While in case of planet, as planets are पहला तो nearby Earth. Suppose the beam of light for the star is this. The beam of light coming from star is this. The beam of light from the planet is like this, and this is our Earth. This is our Earth. So because of this, the planets do not twinkle.
तो ये अपना कंसेप्ट था स्टार्स की ट्विंकल करने का। अब देखते हैं अपन अदर कंसेप्ट जैसे रिलेटिव स्टार, जैसे कॉन्स्टलेशन होता है। कॉन्स्टलेशन कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन कॉन्स्टलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग a recognizable pattern. Group of stars forming recognizable pattern. कुछ स्टार में मिलके कुछ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न फॉर्म करते हैं तो उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। फ्रॉम एंशिएंट टाइम द कॉन्स्टलेशन आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। many ancient scholars predict many things from the this constellations, है ना। तो constellations के example, this is Big Dipper, the some stars forming the shape like this। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं चम्मच का शेप है। This is the shape of the spoon. This is example of constellation. Pole star, star which is aligned with the axis of rotation of the Earth, which is aligned with the axis of rotation on of Earth, rotation of Earth, Earth के axis of rotation से। कैसे? जैसे अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है जिस पे अर्थ रोटेट कर रहा है, इससे अलाइंड है, ये है पोल स्टार। तो पोल स्टार हमेशा हमें एक ही जगह पे दिखता है। तो with the help of pole star we can find the directions। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के पोल स्टार को क्या बोलते हैं अपन? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पोल स्टार इज पोलराइज, while in southern hemisphere it is sigma octantis। sigma octantis। Pole star always appear to be fixed in the sky. However, the angle at which pole star visible varies with latitude, but it always appears to be fixed in the sky. Now, our next topic is galaxies. Galaxy. Now, let's understand galaxy. Galaxy. Galaxy क्या होता है? Galaxy is a sprawling system, sprawling system of gas, dust, dark matter, and stars held together by gravity. Together by gravity। तो गैलेक्सी को देखते हैं अपन। Let's see some examples. These are the types of galaxies. This is spiral galaxy. This is spiral galaxy. Spiral galaxy. Our Milky Way is an example of spiral galaxies, है ना। irregular galaxy कैसे भी हो सकती है, कोई फिक्स मतलब लाइन नहीं है। This is paired galaxy, specular galaxy, elliptical, lenticular। These are various examples of galaxies। आपने जैसे कि अभी गैलेक्सीज को देखा images में। Galaxies are like, we take the example of a spiral galaxy, it is like this spiraling। और इसमें वेरियस स्टार्स हैं, ऐसे स्टार्स हैं, इसमें बहुत सारे ना। बट इन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, this is the center of the galaxy। in center of galaxy there is a massive black hole। ब्लैक होल होता है गैलेक्सीज के सेंटर में। let's see the types of galaxies। galaxies के types दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल गैलेक्सी एंड स्पेकुलर गैलेक्सीज। एग्जांपल्स हैं जैसे स्पाइरल, इलिप्टिकल, irregular or specular galaxies are interacting galaxies। interacting active galaxy। active galaxies are those galaxies emitting gamma radiation। gamma radiation emit करती हैं।
जैसे एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव गैलेक्सीज, क्वासर्स, इंटरेक्टिंग गैलेक्सीज। बेसिकली जब दो गैलेक्सी एक दूसरे से मतलब मिल रही हो, कंबाइंड हो रही हो, तो वो इंटरेक्टिंग गैलेक्सीज होती हैं। व्हेन टू गैलेक्सीज अप्रोचिंग टू ईच अदर, है ना, दे आर कंबाइनिंग, तो दिस इज नोन एज इंटरेक्टिव गैलेक्सीज। लेट्स सी अवर मिल्की वे। Our Earth is located in Aryan arm of Milky Way galaxies. Milky Way गैलेक्सी ये अपनी गैलेक्सी है जिसमें है। अर्थ कहाँ है? मिल्की वे के अरियन आर्म में है, अरियन आर्म ऑफ मिल्की वे। सम फैक्ट्स जैसे नियरेस्ट गैलेक्सीज, गैलेक्सी टू मिल्की वे नियरेस्ट गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा। नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ब्राइटेस्ट स्टार्स नियर आवर सोलर सिस्टम, brightest star is Cirrus, which is 8.6 light years. So this is all about galaxy, galaxy, types of galaxies. Now let's understand solar system. Solar system क्या है? Solar system is basically a collection of 8 planets, their moons, moons are the natural satellite, their moons, and various other heavenly body, including asteroids, meteors, meteoroids orbiting the sun, orbiting the sun. तो लेट्स सी सोलर सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपना सोलर सिस्टम है। दिस इज सन, दिस इज सन, देन फर्स्ट प्लेनेट इज मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, then Jupiter, then Saturn, Uranus, Neptune, and between the Mars and Jupiter, there is an asteroid belt. This is our solar system, and there are various theories related to the origin of the solar system. Theories जैसे है evolutionary theory, evolutionary theory इसमें भी दो थ्योरी हैं, gaseous hypothesis, nebular hypothesis. Evolutionary theory, as per this theory, the material of solar system is condensed into sun and simultaneously planets originated as isolated mass of matter from a single cloud of gas. इसमें पहली थ्योरी अपन समझते हैं gaseous hypothesis. Gaseous hypothesis. This is given by Immanuel Kant. Immanuel Kant ये बोलते हैं कि initially there was a gaseous cloud made of hard and cold particles which are supernaturally created. Initially क्या था? Gaseous cloud था of hot and cold particles. These are supernaturally created, which are supernaturally created. Supernaturally created. फिर क्या हुआ? These particles collided with each other. Collision हुआ, collided with each other. Due to collide क्यों हुए? Due to gravitational force, gravitational attraction. When these particles collide, it releases heat, and then gradually a rotating nebula kind of structure formed. Rotating nebula kind of structure is formed.
kind of structure formed from which rings of matter thrown off, which gradually resulted into the formation of planets. When these rings of matter cool down, planets form. This is gaseous hypothesis theory. Initially, there was a gaseous cloud with hot and cold particles, which are supernaturally created. These particles are collide with each other due to gravitational attraction. Because of this collision, heat is released, and because of this heat, the kind of structure is formed, which thrown the rings of matter. And this is our theory of gaseous hypothesis. Second theory is nebular hypothesis. Nebular hypothesis. Nebular hypothesis given by Laplace. Who given this theory? Laplace. बोलते हैं कि a pre-existing nebula was there in a rotating state. Pre-existing nebula था. Pre-existing nebula was there. So in a story, there was a pre-existing nebula in a rotating state. In a rotating state. And with its gradual cooling of this nebula, gradual cooling, this nebula shrinks. Nebula shrinks. Nebula shrinks. It led to spinning. Spinning. More spinning. Spinning होगा तो temperature will rise. Temperature increases at the center point. Center point of this nebula. Temperature increases. This resulted into the formation of a flat disk. Formation of flat disk. Flat disk formed. Then the rings of matter got ejected. Rings of matter got ejected from this flat disk. Rings of matter got ejected from this flat disk due to centrifugal force. Outer force, centrifugal force we have studied. Centrifugal force, and which condensed into planet. Condensed into planets. According to nebular hypothesis, there was a pre-existing nebula in rotating state. With its schedule cooling, nebula shrinks, which led to spinning. With more spinning, the temperature rises at the central point, so gradually result in the formation of flat disk. From this flat disk, matter got ejected, which cooled down into form, condensed to form planets. These are the two basic theories related to the origin of solar system. Nebular hypothesis is theory, widely accepted theory related to the origin of solar system. Various other theories भी हैं. Planetesimal theory by Chamberlain and Moulton, tidal hypothesis. तो प्लैनेटेसिमल में कुछ नहीं है. प्लैनेटेसिमल में क्या होता है, मोटा मोटा समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू चेम्बरलेन एंड माउंटन, there was a binary system of protostar which was accompanied by companion star, accompanied by protostar accompanying the companion star. When this companion star come near to the protostar, when this come near to the protostar, gravitational pull, which gravitational pull led to ejection of matter of protostar, ejection of matter of protostar gradually cools down and to form planetesimals. This planetesimal gradually merged to form planet.
and decimal marks and form planets. Tidal hypothesis. Tidal hypothesis. Tidal hypothesis. Jeans and Jeffries. Jeans and Jeffries. There was a this is our sun. According to this is our sun, and there was a big, including a massive star which passes near to our sun, led to the gravitational pull. Gravitational pull, which ejection of tides of material, ejection of material, ejection of tides of material, which cool down to form planets. So, solar system. As you think, this is our solar system with various planets. Let's understand sun. Understand with this, there is a core in the sun. Then in the sun there is a radiative zone, then a convective zone. Let's come on sun's atmosphere. On atmosphere, first layer is photosphere. Another layer is chromosphere. Then corona, corona, and a core innermost layer with temperature of 15 million degrees Celsius तक टेम्परेचर हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कोर में चलता है सन के जो विच कंटिन्यूसली रिलीजेस एनर्जी दिस एनर्जी कैरीड फॉरवर्ड बाय रेडिएटिव जो है ना and through this फिर next zone is convective zone and through the convective zone heat is released to the surface then there is a photosphere. Photosphere is the region from where visible light originate from the sun visible light जो अपने को दिखता है वो photosphere दिखता है. Lowest layer of the sun. Photosphere is also the brightest layer. Temperature of photosphere is nearly 5500 degrees Celsius. Where core is too hot with temperature of nearly core को have a temperature of nearly 15 million degrees Celsius. We know for nuclear reaction, this nuclear fusion reaction, this temperature is required. And after photosphere, there's chromosphere. And during solar eclipse, we see the chromosphere. Solar eclipse, chromosphere is visible like a ring, red ring, like a red ring. Chromosphere is visible during solar eclipse. Then there comes corona, outermost layer of sun with temperature of 2 million degrees Celsius. It is even more hot than photosphere. During total solar eclipse, corona is visible. So total solar eclipse. Total solar eclipse, corona is visible. Then there was a then you have heard about solar flares. Solar flares nothing but sudden outburst of energy. Sudden outburst of energy releasing a storm of hot atoms into the space. Into the space. Then you have heard about sunspots. Sunspots are the dark portions on photosphere. Dark portion on photosphere. Sunspots are on photosphere. This temperature is lesser than other parts of the photosphere. With reduced temperature. But in this zone of sunspot, there was a strong magnetic activity. This sunspot varies. There is a sunspot cycle. Etc. Average it is of 11 years. Sunspot cycle is of 11 years. Varies on photosphere. Let's understand planets. Planets.
What are planets? Planets are the heavenly body, heavenly round body orbiting sun, around body orbiting sun. This is our solar system. These are various planets, sun, which are revolving around the sun. This first planet is Mercury, then Venus, then Earth, then Mars, then Jupiter, then Saturn, then Uranus, Neptune. So let's understand first planet, Mercury. Is this is our sun? First planet is Mercury. Mercury is nearest to the sun. Nearest to the sun. There's no atmosphere is Mercury. No satellite. Smallest planet. Year on Mercury is of only 88 days. Then there come Venus. Venus is known as Earth's twin because the size of the Earth and Venus are somewhat similar. Venus, Earth's twin, Earth's twin, due to same size. And hottest and brightest. Venus is hottest and brightest. Venus is hottest planet. Hottest planet in our solar system is Venus and brightest. Venus is even more hottest than Mercury. है ना? More, it is more hot because of more amount of CO2. CO2. Then there come Earth. Earth, blue planet, third planet of our solar system, blue planet on which life exists. है ना? There is a concept of Goldilocks zone also. Just understand Goldilocks zone. Goldilocks zone existed between Earth and Mars. Existed between Earth and Mars. This is the zone where life exists. Where life exists. Liquid water exists. Water exists. This is Goldilocks zone between Earth and Mars. Then we are studying about the Earth. Is satellite of Earth is Moon. Then there come Mars. Mars is red planet. मार्स को अपन रेड प्लेनेट भी बोलते हैं. स्मॉलर है. मार्स इज स्मॉलर देन द अर्थ. सैटेलाइट्स हैं मार्स की, डीमोस, फीबोस, है ना. Between the Mars and Jupiter there is asteroid belt. Asteroid belt. So the planets are divided into, because of this asteroid belt, into terrestrial planet and Jovian planet. Jovian means Jupiter-like. These are Jovian planet, while the inner planet are terrestrial planet. Terrestrial planet. Terrestrial planet are in close vicinity of the sun. है ना, made of terrestrial planet are made of rocks and metals. Their Jovian planets are far away from the sun, made up of gases, है ना, with thick atmosphere. Thick atmosphere. There is thin atmosphere, है ना. The Jovian planets have more number of satellites. Terrestrial planet has lesser numbers of satellites, but in terrestrial planet there is strong solar wind, which is not in Jovian planet. So these are the planets. Then start with Jupiter, the largest planet of our solar system. Largest planet of our solar system is Jupiter. It is somewhat 11 times bigger than Earth. 11 times of Earth. 11 अर्थ आ जाएंगे भाई जुपिटर में. Then Saturn, lightest planet. Saturn, lightest. Striking feature of Saturn is this presence of ring. The ring around Saturn is a striking feature. Only Saturn has the rings. Then Uranus. Then Neptune. Neptune is the only planet on which is not visible through naked eyes. Smallest planet in Jovian planet, no, Neptune, called as Uranus twin. So this is all for our today's class. I hope you found the class productive.
दिस विल हेल्प यू फ्रेंड्स। आप नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइए, इसलिए मैं आपके लिए लिखता हूँ। थैंक यू।